आप किधर से भैया? मैं मलयाली है। मलयालम है। ओके। MBBS डॉक्टर है। ओके। सर्जन है। MBBS मंगलूर में किए। मंगलूर में किया है? फिर बाद में पढ़ाई नागपुर अहमदाबाद में करके अभी तमिलनाडु ओके। चेन्नई के पास वेलूर में काम करता है। ओके। बेंगलोर में क्या काम है भैया? अभी एग्ज़ाम लिखने को आया। एग्जाम में लिखने का है? हाँ। आप इधर किधर रहता है? मेरा कोतनूर में रहता है, मेरा फैमिली कजिन्स रहता है। कन्नड़ बोलते हैं भैया आपको? हाँ, कन्नड़ बोलते हैं? ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಆಕಾಶ್ ಮೂವಿ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಕನ್ನಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡನ ನೀವು ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಕೊಲೀಗ್ ಜೊತೆ हाँ। ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ? उसको सॉरी इतना डिडंट अंडरस्टैंड। What I am telling, हाँ you, हाँ your peoples, your friends or colleagues, हाँ you can learn Kannada. yeah I have. It's a beautiful language. Yeah. When I talk to patients I still use Kannada. ಕಿಮಿ ಉಂಟ, ಕಫ ಉಂಟ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು. and Kannada I think it's a very nice, like easy to learn also, not difficult. ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ MBBS ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಹಾಂ, ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್ MBBS, ಹೌ ಟು ಕೋರ್ಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು? how to get into, how to become a doctor. I think becoming a doctor, Study hardly. I think class 9 onwards, if there is interest, you should have an interest. Doctor is not like any other occupation. You don't need big brain. It's a very normal common sense observation. But daily reading, maybe from 9th standard, if you daily 1 or 2 hours also if you read, it is very easy to get. It's not like IIT, IIM. It's much easier, and it's a beautiful work. Basically you are working with God's best creation. Daily you will see something new. All that is the novelty, but on the opposite side there are some difficulties. Sometimes patient dies, patient's relative will shout at you, beat you. All that little bit you have to be careful in India. I think during training every doctor gets beaten once at least. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, हाँ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ? फिर से बोलो. क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ आप पढ़ाई मंगलूर में किया ना? हाँ, आपका फ्रेंड्स कन्नड़ा वाला है क्या? कन्नड़ा वाला है, मंगलूर वाला है. हाँ। और उधर तो बहुत अच्छा था. मंगलूर में हमको सारा लैंग्वेज, पेशेंट खाली कन्नड़ा नहीं आएगा, वो लोग कोंकणी भी आएगा, तुलु भी आएगा, डेरी लैंग्वेज भी आएगा. तो सब हमको उनका लैंग्वेज में बात करने का, पेशेंट उनका लैंग्वेज में बात करेगा तो ही वो डिटेल में सब करेक्ट बोलता है. सब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बेसिक थिंग्स यू कैन लर्न. yes ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಊಟ ಆಯ್ತು. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Maximum 6 months it takes to understand normal communicative Kannada. Yeah. It's not very difficult. No, not difficult. It's sweet. Kannada is very good. Yeah. What I am telling, other language is difficult. Other language very difficult. Pronunciation is Very difficult. Kannada is very sweet. Very sweet and very easy to learn. You learn immediately. Yeah. I am telling you, tell me, repeat. कन्नड़ा में सत्य. कन्नड़ा में सत्य. कन्नड़ा में सत्य. कन्नड़ में सत्य. कन्नड़ में नित्य. कन्नड़ में नित्य. जय हिंद. जय हिंद. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾರು MBBS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್. ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ವೇಲೂರಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲಾಗೆ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರಂತೆ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಲಂಡನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Licensing exam by the Royal College of Surgeons of England. So essentially it is a competition between countries.
So right now, starting in half an hour, surgeons from everywhere across the world, India, Sri Lanka, Arab countries, Europe, America, all of us will be writing this exam to get it. Is the paper will be set by the Royal College of London. Yes, thank you. How is that my trip, sir? I had a wonderful trip with you. Thank you for. Thank you, sir. दोस्त के साथ बात नहीं करता है. मेरे फ्रेंड्स कलीग्स जो बात करते हैं तो मैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे क्या करें. जैसे उन लोग कुछ बोलते हैं जैसे लेफ्ट चलेंगे या लेफ्ट होगी या राइट होगी या फिर मुंदे होगी बैक होगी. एंड जैसे टी शॉप्स में हम लोग चाय वाय पूछते हैं तो सर 1 टी और लाइक हम लोग बोलते हैं कि 1 टी गुड़ी या 2 टी गुड़ी है ना. या फिर हम लोग जैसे पैसा जैसे मेरे को 10 रुपये मतलब 10 रुपीज़ है ना. 20 रुपये मतलब 20 रुपीज़ है ना. 30 रुपये मतलब 30 मतलब वो 30 और मलयालम में 30 30 रुपये तो वो कंपेरेटिव वैसा हो जाता है. ओके तो वैसे समझता हूँ. ओके भैया, आप कन्नड़ा कैसा है भैया? कोशिश किया है आप सीखने के लिए? सीखने के लिए बहुत बार कोशिश किया है. जैसे कि कन्नड़ा कोई पूछता है यू कन्नड़ा यू नो कन्नड़ा लाइक कन्नड़ा गोत्ती ना वाला तो कन्नड़ा गोत्ती ना लाइक आई डोंट नो मतलब आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बट उनको बोलना नहीं आता. प्रॉब्लम ये है बिकॉज सम वर्ड्स हो जाते हो थोड़े ट्विस्टिंग हो जाते हैं. आप बेंगलोर में रहता है ना? हाँ. बेंगलोर का हिस्ट्री पता है क्या? कर्नाटका है, आप इधर रहता है, इधर का हिस्ट्री सब कुछ पढ़ा है क्या? बैंगलोर का हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा इधर उधर का पता है क्या. कौन बनाया इसको, कहाँ से किया, कौन किया, किधर किया? बैंगलोर वॉज फाउंडेड बाय टीपू सुल्तान राइट. नहीं नहीं नहीं, केम्पेगौड़ा. केम्पेगौड़ा मेड बाय केम्पेगौड़ा. ओके. स्टार्ट इन 1887. हाँ. आप मेरे को कन्नड़ा में बताओ, मेरे को नहीं समझ में आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा. मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना समझ पा रहा हूँ आपका कन्नड़ा. नहीं कोई बात नहीं है, बेसिक थिंग्स आप समझ में आ गया तो बस. हाँ. क्या है, आप कुछ लोग आपके साथ बात किया तो हाँ. तुमको गाली दिया तो कैसा पता मालूम होता है? वो अपने एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन से हंस के गाली दिया तो अंदर से गाली दे तो शायद नहीं समझ पाए. इसलिए आप किधर ಇರೋ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇರಿ, हाँ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಿ, हाँ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತ್ರೆ हाँ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? हाँ ऊटा आया मतलब कुछ खाना खा लिया. ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? हाँ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ये लोग क्या इधर करे कहाँ जा रहा है. ऐसा बात आपको मालूम हो गया तो ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? हाँ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟನಾ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ? हाँ. ಸಮझ में आया? सॉन्ग ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ? गाना ಇಷ್ಟ ಕಲಿಬೇಕು. कला कला इष्ट यस आई लाइक कन्नड़ा राइट. yes, yes, यस yes. आई लाइक कन्नड़ा राइट. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೈ ನೀವು? मतलब क्या काम करता है? उसको क्या बोला आपने? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಐಟಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. जॉब मीन्स ಕೆಲಸ. ओके. वही तो तुम लोग का दोस्त का बस कोलीग का बस आप बात किया तो हाँ. समझ में आ जाता है. Okay. मतलब तुम्हारा ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ हाँ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜೊತೆ हाँ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, Bangalore climate ಇಷ್ಟ. Bangalore people, they are helpful, and Bangalore has given me, I would say, like the life to survive. Okay, the job, the career, the money that I need to look after for my family, everything. So that's why I like Bangalore. I don't want to leave Bangalore. Is my concern is always. ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರಲ್ಲ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ವೈಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ. Because easy Bangalore to Kerala communication is very easy for me. So ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಬರುತ್ತಾ? ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ? I understand Tamil. I can Okay. speak somewhere here and there. Telugu I can understand. I can understand Gujarati. I can speak and understand Punjabi. Hindi is very fluent for me, and English too as usual. ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ. हाँ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ನಿತ್ಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೀನಿ.
ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೀನಿ. ಕಲಿತೀನಿ, which means ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ. I will learn Kannada. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ. I have to learn Kannada. That is for sure. I have to learn Kannada. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ For ಜೊತೆ the viewers, do follow him. He's really good. He's a really good person. He literally made me to understand a lot of things, basic things which I can communicate to my office, to people, to the guys like who are helping me out to reach to my office locations and all. In Kannada, I can at least tell them that they have, when we have to take a right, I can tell them sir left hogi, or I have to take a, because Kannada language नहीं आता बोल के झगड़ा हो रहा है. नहीं. वो मैं विजिबल नहीं समझा अभी. उसका रीजन ये है, अगर आपको बेसिक पता है, कोई भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, इवन ऑफिस में भी आप ज्वाइन करते हो फॉर योर वर्क, ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको 100% काम आता हो. यू शुड नो द बेसिक, ओके. है ना. अभी आपको कॉल करा कोई ऑटो रिक्शा, जैसे आपने मेरे को कॉल किया, मैंने बोला सर मैं आपके बैक साइड ही हूँ, यस. राइट. हिंदी में मैंने, या फिर मैंने आपको कन्नड़ में बोला सर जस्ट आई एम अभी हमें कैसे बोलते इसको, ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸರ್, ಹನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದೆ 2 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಬಂದಿ ಸರ್. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. हाँ वेट मारी ಬರ್ತೀನಿ. इतना बोलना इनफ होता है किसी को, बेसिक, 100%. राइट. कोई भी लैंग्वेज का 100%, मैं आज तक, माय मदर टंग इज मलयालम, मैं आज तक अपना मलयालम 100% नहीं सीख पाया हूँ, है ना. सो नो बडी कैन लर्न मलयालम और एनी लैंग्वेज 100%. वी डोंट स्पीक परफेक्ट इंग्लिश ऑल्सो, हम लोग परफेक्ट इंग्लिश भी नहीं बोलते. So, Nobody is perfect, हाँ. but then you can manage. Wherever you go, you can learn local language. local language, correct. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ Basic people want that if you are in a city, you know the basics at least, Yes, because it is very much mandatory to understand those language. But some people, when I see the videos and all those things, I'm scared. It's not like I'm not scared. I also think like I'm also an outsider. मैं भी बाहर से आया हूँ, मुझे भी लगता है कि यार कभी मेरे साथ ऐसा ना. बट आज तक किसी भी ऑटो ड्राइवर्स हो, कैब ड्राइवर्स हो, they have never been rude to me. They have never been anything, because I don't know sir, I don't know. It is simple. I'm not panicked or not got angry on that why should I learn it. There is no flaw in learning something. Everything is learning. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, हाँ. आई एम टोल्डिंग यू आर गुड. मैं बोला तो आपको अच्छे के लिए बोलता हूँ. हाँ. तो बेसिक थिंग्स को मालूम है तो आपको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं समझ में आ जाता है ना. Correct. इसलिए मेरा काम गलत है सच है. नहीं सही काम है सर आपका. मैं किसी ऑटो ड्राइवर्स को कभी गलत नहीं बोला. जो केसेस हुए ना, मैं कभी नहीं बोला. मैंने एक ही चीज़ बोला है, तुम बेसिक रखो. एंड सामने वाला अगर ऑटो वाला बोलता है तुम्हें कि सर आपको करना क्यों नहीं आता, तो उनको बोलो सर लर्न करना कोई लैंग्वेज. इंग्लिश हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी स्कूल में पढ़ाते हैं, मलयालम बचपन से मम्मी लोग से सुनते हुए आ रहे हैं, तो लर्न करते हैं. अब कन्नड़ा हमें स्कूल में नहीं पढ़ाते. अब यहाँ स्टेट लेवल में पढ़ाया जाता है, हमारे स्टेट्स में नहीं पढ़ाते. तो ऑब्वियसली लर्न करने के लिए हमें लोगों से कम्युनिकेट करना है. सो इफ़ यू आस्क द ऑटो ड्राइवर्स टू टीच अस, दे विल बी हैप्पी टू टीच यू, बिकॉज कोई इंसान खराब नहीं होता. सबके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होंगे. अब तुम गुस्सा करोगे कि हम क्यों सीख रहे. इट्स अ टोन ऑफ आस्किंग, लोगों से पूछने का, समझने का. जैसे मैं भी आप मेरे को बोला आपको करना आता है, मैं गुस्से में आपको बोल लेता कि सर मैं क्यों सीखूँ आपसे करना. नहीं. आपको गुस्सा आया था, वी कुड हैव हैड अ फाइट एंड आर्ग्यूमेंट. वही इंसिडेंट्स होते हैं जो ये सिनारियोज बनते हैं बैंगलोर में फाइट्स के. रादर देन दैट, इसलिए बोल दीजिए सब लोगों को कन्नड़ा 50% नहीं तो 20% सीखो. बेसिक थिंग्स सीखते हैं. बेसिक थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नड़ा सीखने के लिए. नॉट इन वेन आप बोल दीजिए कन्नड़ में. मैं बोलता हूँ. इट्स अ थिंग. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಭಾಗನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ಈಗಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಭಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಕಾಲು ಭಾಗನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ್ ಭಾಗನಾದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.